fact, our Prime Minister recently said designing in India for the world, and that's essentially what we're doing. This is a totally made in India. Totally, I would say imagined, designed, and made in India. नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहां पर एक नया आउटलेट, नया शोरूम खुला है बाइक्स का, जो कि अल्ट्रा वायलेट का ये शोरूम है। और हाई परफॉर्मेंसेस बाइक जो यहां पर हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बाइक रेसर हैं, या जो भी बाइक के जो राइडर्स हैं, जो बाइक को जो हाई फाई टेक्निक की जो बाइक्स को पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी यहाँ पे बाइक है। F77 मैक 2 का जो लॉन्चिंग हो रहा है, और ये दिल्ली नहीं, पूरा जो है नॉर्थ इंडिया का जो है कह सकते हैं कि पहला शोरूम जो है दिल्ली में यहाँ पर खुला है। हालांकि इससे पहले जो है 2016 से बेंगलुरु में इनके जो है शोरूम्स हैं। उसके अलावा जो मैं बता दूं कि जो टेक्निक इस बाइक्स के लिए जो यूज की जा रही है, इलेक्ट्रिक बाइक है, और इतनी हाई फाई टेक्निक है जो पूरे यूरोप और जापान के जो टेक्निक होती है वो इस बाइक में यूज की गई है। और आइए मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ इसकी लॉन्चिंग में, और दिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की बाइक है, इसके क्या फीचर्स हैं, और किस तरह से इस बाइक की शुरुआत हुई। So, hi guys, I welcome all of you to the launch of Ultraviolet Space Station at Delhi on this very busy weekday. Thank you all for coming. We have Mr. Narayan Subramaniam and Mr. Neeraj Rajmohan, who are founders, here today to launch the event and for the launch presentation. So first, let's start off with the ribbon cutting, and please. Service center also. So everyone settled? Guys, welcome to the launch of our 12th experience center across India, and this is the first in North India ultraviolet space station that we're launching today, and we're very happy and excited for you guys to be here. Without further ado, I would now like to invite Mr. Narayan Subramaniam over here and grace us, please. Thank you, Jatin. Good morning, Delhi. Welcome all of you. And like Jatin said, it's a proud occasion for us. We formally complete our phase 1 of expansion with one of the most important cities in our roadmap, which is the Delhi NCR region, starting out here today. And let me also give you a small introduction to the brand, what we set out to do. So we've got a few slides here that gives you context to who we are, what we've done, and what our roadmap ahead is as well. So to begin with, Ultraviolet began with the vision of making in India for the world. Neeraj and I have been friends from our childhood. Both of us know each other for a very long time. I come from an automobile design background. I'm a designer who was working in Japan, Europe, before coming back to India in 2015. Neeraj was on the technology side, on the hardware, software, electronic side. He was working in the US and India before coming back in 2014-15 as well. And for the both of us, what we realized was the large companies are taking time to innovate. We could see companies like Tesla that are rapidly progressing on the technology and the disruption front of the mobility space. And we believe that with the right kind of team, we could pull off something like that in India. We were very confident. India has all of the talent when it comes to design, technology, and a very rich heritage of motorcycling. And all of this together, we were quite confident of building a great brand and product, set of products out of India for global markets. So, designing in India for the world was the vision that we started with. And today that is reality. What you see behind me is a launch in Europe, which happened early November. So the F77s are what you see, the motorcycle here, the F77 Mark II, is now Europe certified, which enables us to have our presence across 40 different countries around the world. So this also goes back to 2016 when we started designing our technology and systems. That we were clear it should be compliant for global markets and use cases.
And it is that 7 years of R&D today that has given us a product that is now actually being designed in India, going to global markets in the same way, shape and form. Right? So there is no difference between the specs on the India motorcycle variants and the global variants as well. So this was EICMA, which happens in Milan every year. It's the mecca of motorcycling, where a lot of concepts, a lot of companies showcase their current future portfolio of products, and the ultraviolet F77 was widely appreciated for the design and the specifications across the board. We also showcased a concept called the F99, which is India's first superbike. I have a little more on that coming ahead. And Concept X, which sort of is a representation of how the ultraviolet portfolio is going to expand in the months to come. What we have done is that we have vertically integrated every aspect of the technology within the company. From starting with the software, the embedded systems that are running on the vehicles. So for example, our vehicle control unit has 3 different microprocessors, each running its own operating system. There's one for the cluster, which is running a Linux operating system. There's a real-time operating system, which is controlling all aspects of the vehicle, very similar to a flight controller on a drone. And then there's a third system, which is the telematics unit, which is collecting about 3,000 data points every second and analyzing that data to make sure that you are having a complete experience on the vehicle. दोस्तों नमस्कार, this is Sanjay Agarwal. So I am with the co-founder for this bike. This is a bike which was launched in Bangalore 2016 में. मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ for the 24 April. Okay, wonderful. So आप थोड़ा सा बताएंगे when you started, right? And अभी this bike is launched today, 77 Mac 2, right? And then you have a 99. वो कब आ रहा है? Yes. Thank you. I'm Narayan, CEO and co-founder of Ultraviolet. We've been in R&D for about 7 years today to develop all of the systems for the F77 Mark II, which is a performance sports motorcycle, completely electric. So it's taken us 7 years to develop the battery systems, the powertrain, the onboard electronics, and today we have a machine that has the highest specs across the board. Single charge range of 323 kilometers IDC, a top speed of 155 kilometers per hour, torque of 100 Newton meters, and a whole host of tech functions, Violet AI, Delta Watch, dual channel ABS, got multiple levels of traction control, 10 levels of regenerative braking. All of this essentially make it among the most advanced electric motorcycles in the world. Wonderful. And my next question is that the Prime Minister of India, Narendra Modi, he is wanting such youth, He's looking for people like you. And he's giving a lot of, we want to grow as an economy, 2047 when we complete 100 years. So what's your vision for 2047? I mean, what we're doing entirely aligns with that vision. In fact, our Prime Minister recently said, designing in India for the world. And that's essentially what we're doing. This is totally made in India. Totally, I would say, imagined, designed and made in India. Wonderful. And today we are certified for global markets. We are Europe certified, which means today we have the ability to take the product to 40 countries across the world. Good. So thank you, धन्यवाद. और I just wanted to add कि इनके साथ जो co-founder है is Neeraj. So Neeraj का थोड़ा सा just one line introduction. So I'm from an automobile design background. I was working as a designer in Germany and Japan before coming back to India. Neeraj and I go back a long way. He's from a computer science and electronics background. He was shuttling between India and the US before he came back in 2015. And that's when both of us collectively felt the large companies are taking time for disruptive innovation, which is where a small group of like-minded and focused people could make a change and do all of this from a design, hardware and software side right here in India. And I think that's where we began. So I just wanted to add lastly that this is going to be the talk of the town, and this is going to be the most happening place in the coming days and years. And I just wanted to say I think the best brands are across आपके left or right में. Absolutely. So they are there. So welcome Delhi, welcome to this place. Thank you. Appreciate the support. Thank you. Thank you, sir. तो आपने ये खास रिपोर्ट देखी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट संजय जैन के साथ, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी सुविधाएं जो है
बाइक के जो खरीदने से लेकर के उसकी सर्विस से लेकर के उसकी चार्जिंग से लेकर के सारे जो फैसिलिटीज जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स को, जो राइडर्स को या कहीं जो बाइक परचेजर है उनको मिलने वाली है। अभी मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मेरी इनके जो को फाउंडर्स हैं उनका इंटरव्यू के दौरान और उनकी जो मार्केटिंग के इंटरव्यू हुआ, तो ये जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है नारायणा में, तो उनसे चर्चा हो रही थी कि ये लोग अभी और शोरूम्स दिल्ली में खोलने वाले, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में, ये सब जगह खोलना चाह रहे हैं। तो जो लोग भी इनसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनका जो विजन है ये ऐसा नहीं है कि आज ये बाइक में है कल नहीं है, क्योंकि ईवी सेगमेंट में कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ लोग आते हैं प्लेयर्स और वो फिर अपना ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाते। ये लोग का पूरा R&D जो आपने देखा अभी वीडियो में जैसे देखा कि वो बाइक से कैसे वो निकल रही है, तो इसके अंदर एक बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड लोग हैं और इनकी टीम को मतलब इसमें जो भी नारायणा देखना चाहे। और इनकी बाइक अभी जैसे इन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा कि आपने 8 साल की वारंटी क्यों रखी है, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग ने शुरू में तो 1 साल की रखी थी और 1 साल में कितना वो चलाएगा, मतलब 1 लाख से ज्यादा नहीं चला पाएगा, ज्यादा यूज भी नहीं हो तो वो मतलब इन्होंने जो रखा, लेकिन इनको अपने प्रोडक्ट का विश्वास है। यस, उस कॉन्फिडेंस के जरिए 8 साल की कहीं ना आपको भी लग रहा है कि ये बाइक आपने तो चलाई भी थी आज, बिल्कुल उसकी फीलिंग अलग आ रही है, मस्त फीलिंग सेफ है वंडरफुल। इसमें। यस यस, वो सारा इसमें ये जो AI का बता रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और फिर एक इन्होंने जो रीजनरेटिव बताया कि जो लॉन्ग राइड्स के लिए उसका एक बहुत बड़ा यूनिक बेनिफिट है कि आप जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली से, मान लीजिए लद्दाख जा रहे हैं, तो काफी बाइकर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो जा रहे हैं, तो उनको उन्होंने बोला कि जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पे आप अपना चार्ज करते जाइए। और एक जो बैकपैक है वो ऑलरेडी इनको वो फैसिलिटी दे रहा है। तो उसमें वो जो एक समस्या आती थी ईवी की कि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, उसका भी इन्होंने हल अरेंज किया हुआ है। तो मैं भी रूप सिंह जी के साथ बताना चाहूंगा कि ये जो व्हीकल है उसकी कीमत भी 3 लाख के अंदर है। आज कोई मेरे ख्याल से जो पेट्रोल बाइक्स हैं उसकी भी कीमत 1 से 2 लाख, 1.25 लाख से 2 लाख 3 लाख है। और ये ईवी है, तो ईवी की आई थिंक पहली बाइक भारत की होगी जिसमें सारा सब कुछ आपको एक ही बाइक के अंदर मिल जाएगा। और कुछ जोड़ना चाहेंगे तो बस यही थे हमारे संजय जैन, जिनकी खास रिपोर्ट आपने देखी। और इस रिपोर्ट्स को लेकर के या इस नई बाइक की लॉन्चिंग को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सीनियर जर्नलिस्ट संजय जैन और अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी राइडिंग।